Hello guys, this is Wandering 365 Days welcomes you on Kheer Ganga. In my last video I've shown you the trek to Kheer Ganga but not the destination. But in this video I'm gonna show you the whole Kheer Ganga, the top view of it, the Parvati Mandir and the Alpines. And of course the Dhaulagiri Parvat which is standing erected in front of Kheer Ganga and my campsite as you can point out there. Yeah, you can notice the orange one. Yeah, and the lush green meadows, it's beautiful. As you can see, the sun rays falling on the alpines makes it more picturesque and beautiful. Full sun rays falling on the alpines and the lush green meadows make this site more picturesque and beautiful. What a feeling! The beauty of calmness of Kheer Ganga is remarkable. And what you can see right now is Dhaulagiri Parvat. If you will visit here in winter, the whole mountain gets covered with snow and the scene becomes picturesque. Right now, what you are watching over there, the colorful camps, is the campsite of Hirganga, and you can see the snow covered mountains just behind Dhaulagiri. And what you can spot right now in front of me is the wooden planks, nearby the wooden planks, is the hot spring, which is India's most famous hot spring in Khirganga. Beautiful. धर्मशाला के नज़दीक है तो अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है आपकी वो आप कहाँ स्पेंड करते हो कहाँ स्पेंड करना पसंद करते हो घूमने फिरने के लिए और घर पे ही अभी तो पहले तो मैं कभी घर पे भी नहीं रहना चाहता था। खीर गंगा से आपका कैसा लगाव है 20-25 दिन जिंदगी के अपने मैं काट चुका हूँ इधर। मैं काफी शराब पीता हूँ ठीक है तो यहाँ पे ठेका नहीं है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ सिर्फ सुट्टे लगाता हूँ तो शराब कम हो जाती है and I become little healthier again। आपकी कितनी खूबसूरत आंखें हैं। थैंक यू सो मच एंड अगर आपसे मैं बोलूँ दो सब खीर गंगा को लेकर बोलूँ तो आप खीर गंगा को लेकर क्या बोलते हम कैसा लगता one है of the आपको ये जगह? best hot springs in Himachal Pradesh for sure। The view you get from this hot spring is awesome। At night also sometimes you can come after it closes down। People say that it is very relaxing if you take bath in this hot spring. If you walk for 4-5 hours and you get that warm water for some time automatically and people believe that it cures some of the skin diseases। That's a belief system now। Okay. Yeah but half of it is faith and half of it is belief and we know for sure that Shri Ishwar ji exists। अच्छी बात क्या लगती है यार सबसे अच्छी चीज़ जो आपको आपके दिल को छू जाती है नेचुरल है देखो सबसे अच्छी बात है यार कोई नेटवर्क नहीं है नेचुरल नेटवर्क है। नेचुरल नेटवर्क है मतलब हमारी कनेक्शन डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर वाले से होती है प्रकृति से होती है कोई वर्ल्डली कनेक्शन नहीं है दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं मतलब यहाँ आपको शांति मेडिटेशन जो मर्जी आप यहाँ पे शांति से कर सकते हैं बाकी और जगह पे बहुत क्राउड है यहाँ बहुत शांति है और ना ही डीजे है ना कुछ। कहते हैं कि गंगा भगवान की भूमि है हाँ ये आप क्या कहते हैं ये सब है कैसा ये ऊपर गुफा का दृश्य वाले लिखित यहाँ पे 10 किलोमीटर Parvati Kund, which I was talking about, is the hot spring present in Himachal Pradesh. It is India's most famous hot spring. It's beautiful. It is believed that if you'll take bath in this hot spring, all sorts of skin diseases will be cured, and the stomach disease is also cured with this water if you'll drink it. This is beautiful. Of Dhaulagiri Parvat is epic from this place. Standing erected. It's beautiful, and the beautiful alpines as you can see, and the hot spring. This is scenic. Walk into the temple, the Parvati temple of Khirganga, which is most
renowned and one of the oldest temple of Himachal Pradesh. Let's walk into it. As you can see, the beautiful alpines, the Dholagiri. I'm just spellbounded here. I don't know, I don't have words to say. You have to experience this, you have to visit this place. It's Kheer Ganga. And I will let you know about the story behind Kheer Ganga, why this place is named as Kheer Ganga, and what is the story behind this hot spring, as you can see over there. I'll let you know. And here it comes. I'll show you what is inside it. Yeah, let me enter. Yeah, the view is dark. You can see the sibling of Baba Bholenath. And let's take the view of the hot spring from here and the campsite, the Dholagiri. It's beautiful, my friends. Now, the myth behind this hot spring of Kheer Ganga, I'll let you know. Let's read it. खीर गंगा एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सतयुग से लेकर आज तक शिव पार्वती का निवास है। कहा जाता है कि सतयुग में शिव पार्वती की कृपा से यहाँ खीर बहती थी, पर कलयुग में इस खीर के लिए कलयुग में झगड़ा ना हो, इस वजह से परशुराम जी ने अपनी कृपा से इसे खीर से पानी में तब्दील कर दिया अपने वान से। और यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर एक कार्तिक स्वामी की गुफा है। यहाँ पर कार्तिक स्वामी ने तपस्या की थी। गुफा से कार्तिक स्वामी मानतलाई स्नान करने जाते थे। अब ये गुफा बंद हो चुकी है, तो आप इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। और कुछ फ़ायदे ये भी थे जो मैंने पहले भी बताया इस हॉट स्प्रिंग के अगर आप इस हॉट स्प्रिंग के पानी पीते हो तो आपकी पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इस पानी का महत्व आप देख सकते हैं। इस पानी को पीने से पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये पानी पीने से पुण्य होता है और माना जाता है कि इस पानी को पीने से आपकी स्किन की सारी डिजीज़ भी ठीक हो जाती है। इस पे सल्फ़र पाया जाता है। ये नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन है। आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वॉन्डरिंग 365 आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।